day. So yes, coming days may we're gonna talk about details, may what are the lectures, what are the discussion, and what type of question you will encounter, what are the strategies that you can follow to get your desired score. We will be discovering the TOEFL listening for the entire week in detail, right? So you need not to worry if you think that okay ma'am, this is because most of my student finding TOEFL listening is bit challenging. There are multiple reasons, right? So we're going to discuss all these reasons today in the class, and make sure that you mark your presence here in the chat box so that I can see how many of you are here and I can take your doubt, I can take your queries directly, and I can help you accordingly. चलिए, so start करते हैं with the topics that we are going to cover today. So of course, first of all, we will be understanding the format, quite important. Let us understand the format of the TOEFL exam, right? Not only the TOEFL exam, this is quite clear to you. We will understand the TOEFL listening format, right? What are the things you are supposed to do? What are the things you need to avoid while doing this? We will be identifying the topic and of course the main idea, because what happens when you do the TOEFL listening. First you listen to the conversation, you listen to the discussion, and then after you will see the question. So it's really important while listening, you need to understand the topic that they are talking about, the main idea that they are using, and the supporting details that they are using. So this is quite important, and we will be doing that also. We will be identifying the major points and the important details, and of course the overall purpose. So the very first thing that we will be talking about the format कि TOEFL का listening होता क्या है, how this TOEFL listening or how this listening is different from the other examinations listening, right? So here देखो, सबसे पहले जानते हैं what type of skills you will be asked to have here, what academic skills you need to have to master the TOEFL listening. So first of all, the listening section will measure your ability to understand spoken English in an academic setting. So I am sure most of my students, those who are here, are absolutely aware that I told you that in the TOEFL you are going to encounter all the academic situation when it comes to reading, writing, speaking, listening. Everything is under academic setting. So here also, when it comes to the TOEFL listening, you will be measured that how good you are when you are listening under academic setting. Let's suppose you are listening to the professor and a student's talk, or maybe you are listening to a lecture where professor is introducing a new topic or an academic topic. So how well you are understanding that language, and how you are able to understand the ideas, or maybe the supporting ideas and everything, right? So it's just that you will have that experience where you see yourself that you're sitting in a classroom, your professor is teaching you a lecture, not only you are listening but also you are understanding, you are taking notes, and then after, if the professor wants, he can ask you some question and you are able to answer. Same thing you will encounter here. You will be listening to a conversation, you will be listening to a discussion, and then after you will have question based on the same thing which you have heard. So आपने कितने अच्छे से समझा, आपने कितने अच्छे से notes बनाए, आपकी कितनी detailed understanding हुई है, based on that you will have some questions which you need to answer. तो majorly देखो, if you are finding yourself academically कि आप अच्छे हो, आप अच्छे से सुनते हो, सारे lectures को समझते हो और आप answer कर पाते हो, तो this is not going to be so challenging for you. But if you think कि मैम listening और उसको समझना at the same time is bit challenging, तो yes, वो challenges आप यहाँ भी face करोगे, because all these audios, all these conversations and lectures or the discussions are played once only. You have no other chance that you can rewind, pause, forward. You cannot do anything like that. Okay? So let us discuss the important skills. अब देखो, ये सारे lecture में ना 3 different चीज़ें आती है. जैसे किस टाइप के question आते हैं. कुछ questions आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है आपकी basic information. I mean, I'm not your basic information, the basic information of the lecture or maybe the conversation, कि main purpose क्या था, main idea क्या था, major points क्या थे, right? So you will have a skills, or you will be asked to listen for basic comprehension. अब basic comprehension में जो questions आते हैं, वो questions आते हैं based on main idea, the major points, right, the important details. So these questions, जैसे what is the lecture all about, what the professor was discussing, what was the topic of the lecture. So these kind of question you will definitely see in your TOEFL listening, and for that you need to have a basic comprehension skills, जहाँ पर for the very first few minutes में you will be able to understand कि topic क्या है and what exactly they are going to discuss. तो initially 1 minute तो बहुत ही important होता है, though everything is important. देखो, आपके जो lectures होते हैं
जो आपकी ऑडियोज होती हैं वो 3 to 6 मिनट्स के बिटवीन का होता है, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी एक्टिव, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, बिकॉज वट एवर यू आर लिसनिंग बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव द आंसर. सो अगर आपने कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन लूज किया, आपका ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा, फोकस ब्रेक हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट. सो बेसिक कॉम्प्रीहेंशन आर द क्वेश्चन टाइप. आई मीन दिस इज वन ऑफ द स्किल्स दैट you need to have when you are preparing for the TOEFL. There you will have the question based on major information. फिर आते हैं second one, pragmatic understanding. Pragmatic understanding क्या होती है? This is a kind of skills where not only what they are saying but also you will be asked what is the purpose, right? What is the attitude of a speaker? So the way the speaker has to spoken a certain dialogues, or maybe a phrase, or maybe a word, or maybe a filler, so what he wanted to say. So here you will be asked to recognize the attitude or the degree of certainty. Here you will be asked to recognize the purpose of a speaker. So not only what they are saying but how they are saying, what they want to say, that is also being observed. So this is the another skill. Now third one is connecting information. This is one of the skills that you need to have. Based on that you will have some questions जहाँ पर you will see that you will be asked to connect the information. You will be asked to recognize how the question or how the information is organized. You will be asked to understand the relationship between the ideas and between the the conversation or the lecture present. You will be asked to make a connection between the piece of information. So here जैसे let's suppose the entire lecture you have heard and then after they are saying what they wanted to say या what exactly they have said. So पूरा आपने lecture सुनने के बाद क्या infer कर सकते हैं, what do you understand about particular thing, that will be asked. Okay, so based on these you will have question. तो तीन चीज़ें आपके पास, तीन skills होते हैं. First basic comprehension, यानी कि जो अभी आप lecture सुन रहे हैं, जो भी आप conversation सुन रहे हैं, you will have to understand the major idea, the main point, the main topic, right? Based on that you will have question. Not only this, pragmatic understanding hoti hai that not only you are listening to the context but also you are trying to understand the attitude, you are trying to understand the purpose of saying something, right? Why they are saying this. Or the third one is what? That connecting information, where you are not only listening to the lecture but also you are able to connect the information कि कहाँ से क्या switch हो रहा है और कैसे वो चीज़ों को connect कर रहे हैं. So based on these three skills you will have some questions which you need to answer. Okay, now you don't worry, हम ये सारी चीज़ों को भी डिटेल में सीखेंगे. बट अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन की तो देखिए लिसनिंग में क्या होता है. बेसिकली लिसनिंग includes लेक्चर्स एंड कॉन्वर्सेशन. तो पहली बात तो आप ये समझिए कि लिसनिंग, टोफल लिसनिंग में लेक्चर्स भी होते हैं यानी कि डिस्कशन, और आपके कॉन्वर्सेशन भी होते हैं, राइट? ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. So my games, okay, somebody joined from my games. I don't know the real name of yours, but you are saying what? Ma'am, does IELTS expert batch a two-way communication? Will it be chat or live video call? See, if I talk about all the expert batches, right, here, see, these are the regular classes where we have n number of students. But when I talk about the paid classes, no matter you are taking IELTS classes, you are taking TOEFL classes, वो हमेशा two-way communication ही होती हैं. You will see your examiners. Okay, what's your name? Mannat. Okay, very beautiful name. So Mannat, yes, देखो all these paid batches if I talk about, देखो free classes तो हमारी regular ही होती है where you will have the access through the chat only. You can talk to your teacher through chat. लेकिन when you are talking about the TOEFL expert batch, when you are talking about the IELTS expert batch, all these batches are two-way communication where you will be sitting in front of me or through your desktop. I'll be sitting through my system and we will be having a face-to-face conversation. We will be, taking your doubts, solving, learning, everything, face-to-face. So yes, all the expert batches are face-to-face. Not on video calls. We have the PW platform where you will be given login ID and password. You will be asked to log in and then you will see the schedule. You just need to join करना है, आपको click करना है join now and you will see that you are sitting in the classroom with your teacher and your teacher will call you on stage. You can switch on your camera, you can switch on your mic, everything. Ma'am, how can I improve my English speaking skills? Please suggest some tips. Of course, I will give you some tips. I'll keep this question in my mind. But I think अभी हम focus करते हैं थोड़ा सा इस पे. But I am sure I'm gonna answer for this all, or answer all the questions that you have asked. Okay, thank you. चलिए
ठीक है, तो बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। देखो जो टोफल का लिसनिंग होता है, टोफल के लिसनिंग में लेक्चर्स आते हैं, टोफल के लिसनिंग में कॉन्वर्सेशंस आते हैं, राइट। नाउ हियर you are absolutely allowed to take notes. Now I would say that you must take notes क्योंकि ये सारी audios क्या होती हैं, these are one go audios. I mean you have no chance, you have no control that you can play, you can pause. Once it has played, is at plays, right? तो अगर आपका कुछ skip हो गया, better you move on because it has no negative marking. But the thing is, if you are good at taking notes, if you are pro, right, though I'm going to tell you how you can take notes, but yes, you can be a pro in taking notes while practicing. If you think okay मैम ने बता दिया, अब मैं notes बना लूंगा और हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. Most of my students are sharing these feedbacks with me कि मैम listening तो थोड़ा easy है, लेकिन notes बनाना it's bit challenging. Actually it is challenging because you are listening and at the same time you are writing. So वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, राइट. सो येस यू शुड मेक नोट्स बिकॉज आपके नोट्स ही हैं जो आपको एंटायरली हेल्प करने वाले हैं, राइट. इफ़ यू आर गोइंग टू लिसन टू द लेक्चर फॉर 5 मिनट्स, ओके, तो आपको ऐसा लगेगा 1-2 मिनट, अरे मैं आराम से याद कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है व्हाट दे आर सेइंग. बट एज सुन एज यू विल बी रीचिंग 3 मिनट्स 4 मिनट्स, राइट, यू विल सी आप पहले वाली चीज़ें भूलते जा रहे हो. तो जस्ट टू कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, लिसन एंड ऑल्सो टेक नोट्स सो दैट वंस यू आर डन विद योर 5 मिनट का लिसनिंग, फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें आंसर कर दें विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स. आपके नोट्स आपके पास हैं विच विल हेल्प यू टू रिकलेक्ट क्या स्पीकर ने बोला था, क्या स्पीकर ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड वही इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द आंसर, right. So note taking is really important here. Now here most of the question tasks that follow the lecture and the conversation are traditional multiple choice question. Now one thing that you will really like about the TOEFL listening is कि सारे के सारे question, राइट, टोफल में, टोफल लिसनिंग में सारे MCQs ही होते हैं. यू विल बी आस्क्ड टू चूज आइदर 1 करेक्ट आंसर और 2 करेक्ट आंसर, बट कोई भी क्वेश्चन विल नॉट आस्क यू टू टाइप द आंसर, कोई भी क्वेश्चन विल नॉट आस्क यू टू राइट द आंसर, राइट. यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन होगा, ABCD होगा. नाउ दिस विल बी गिवन इन द इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. यू हैव टू चूज 1 करेक्ट आंसर, you have to choose 2 correct answer. So make sure you are not avoiding reading the instructions and accordingly you are choosing the answer. But one thing is clear कि सारे के सारे question MCQs में ही होते हैं, okay? Now देखो section की बात समझ लेते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, if I talk about the TOEFL listening, ओके, सो हियर यू विल हैव द सेक्शन. ठीक है, क्या सेक्शन में होता है, आपके पास 3 लेक्चर्स होते हैं एंड 2 कॉन्वर्सेशंस होती हैं. सो फर्स्ट यू विल लिसन टू द लेक्चर, देन यू विल लिसन टू द कॉन्वर्सेशन. जो आपके लेक्चर्स की लेंथ होती है वो होती है समवेयर 3 to 5 मिनट्स, और कॉन्वर्सेशन की जो लेंथ होती है वो होती है मैक्सिमम 3 मिनट्स, राइट. नाउ बेस्ड ऑन द लेक्चर्स यू विल हैव 6 क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द conversation you will have 5 questions, and just to complete the entire thing, all these lecture, the conversation and answering the question, you will be given 36 minutes. Now अब you will be asked कि मैम 36 minutes में कैसे होगा, so let me just tell you. देखो, first you will be listening to the audio. There you will not be able to, I mean there is nothing to do with your these 35 minutes. You will be listening to the audio where the conversation is going on, the professor is talking, the student is talking, you are listening, you are taking notes, you are understanding the topic what they are discussing, right, and you are taking notes. Okay, finish. Then you will see the 5 question one after the other. So means all the 5 question will not appear on your screen at the same time. No, आपने conversation सुना, फिर आएगा conversation के बाद पहला question जिसको आपको आंसर करना है. आप आंसर करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तभी आएगा दूसरा क्वेश्चन. उसको आंसर करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तब आएगा तीसरा क्वेश्चन, देन चौथा क्वेश्चन एंड देन पांचवा क्वेश्चन. सो यू विल सी बेस्ड ऑन अ लेक्चर, बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन, यू विल हैव 5 to 6 क्वेश्चन जो एक के बाद एक आते हैं. सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं आते हैं, राइट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कि 35 मिनट्स, सो आपके 35 मिनट्स काउंट होते हैं तभी जब आप आंसर करते हैं क्वेश्चन को. सो टिल द टाइम व्हेन यू आर लिसनिंग टू द ऑडियो, काउंटडाउन आपका नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही आपका ऑडियो खत्म हुआ, यू विल बी आस्क्ड टू आंसर द क्वेश्चन. आपका काउंटडाउन स्क्रीन पे दिखने लगता है क्योंकि 35 मिनट्स है, नाउ यू हैव टू आंसर. तो ऑल लाइक टोटल इफ आई टॉक अबाउट आपके TOEFL लिस्टिंग में टोटल क्वेश्चन आते हैं 28, राइट. टोटल
28 questions. Now, just to solve these 28 questions, you have only 35 minutes. But I would say these 35 minutes are not, very less. You can easily manage, okay? Now, talking about listening section directions, जैसे मैंने अभी आपको बताया that here you will see 3 to 4 lectures, basically 3 lectures and the 2 conversation, okay? Each conversation and lecture are heard once only. You have no other chance that you can replay. After each track, the question will appear one after the other. If the question's worth more than 1 point, this will be given. You must answer each question after, you select next and then okay. देखिए, आपके टोफल में जब आप अपना आंसर करते हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. व्हेन आई से कि जैसे आपने आंसर चूज़ किया तो आपसे जो सिस्टम होता है, जो टोफल एग्जाम होता है, वो 2 बार कॉन्फर्मेशन लेता है बिफोर टेकिंग यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज हियर once you have clicked next, then you have no chance that you can go back to the question and you can correct your answer. तो आपके पास चांस नहीं होता है. So make sure जब भी आप अपना आंसर चूज करते हैं, you are absolutely clear, you are absolutely sure and accordingly you can go ahead. ठीक है. अब यहाँ पर ऑफ कोर्स इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट. सो लेट मी ऑल्सो आंसर मन्नत का भी क्वेश्चन. देखो, इंग्लिश इंप्रूव करना इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. नो मैटर यू आर टेकिंग IELTS, यू आर टेकिंग TOEFL, यू आर टेकिंग PTE, Duolingo, सेल्फ-पिप, कोई भी एग्जाम आप करेंगे, द इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. इट्स अ पैरामाउंट, आई वुड से दैट. Why? Because your entire examination is based on English and all these examinations are going to evaluate that how good you are when you're speaking, reading, writing, listening in English language. So for that, देखो, व्हेन आई से स्पीकिंग के लिए सिर्फ स्पीकिंग ज़रूरी नहीं है. स्पीकिंग के लिए आपको लिसनिंग भी बढ़ानी पड़ेगी. स्पीकिंग के लिए आपको अपना ऑब्जर्वेशन भी बढ़ाना पड़ेगा. यू नीड टू मेक योर एनवायरमेंट. नाउ मोस्ट ऑफ यू विल से कि मैम एनवायरमेंट का ही तो प्रॉब्लम है. देयर इज़ नोबडी दैट स्पीक्स इन इंग्लिश एट माई प्लेस और मे बी माई फ्रेंड्स दे स्टार्ट लाफिंग व्हेन आई से इन इंग्लिश. ये सबके साथ होता है. ये मेरे साथ भी होता था, ये मेरे बच्चों के साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है. आपको अपना एनवायरमेंट खुद बनाना पड़ता है. तो इफ़ यू थिंक कि मैम मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, तो बच्चे मेरे भी फ्रेंड्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं. मेरी फैमिली तो इवन हिंदी भी नहीं, हरियाणवी बोलती है, राइट? सो दैट्स ओके. दैट डजंट मीन कि मैं इंग्लिश भूल रही हूँ, राइट? इट्स जस्ट दैट आई मेक माई ऑन एनवायरमेंट बाय लिसनिंग to the English song, while watching some English news, while listening to the radio, right? While watching some stories with my kids. So what happens that I am listening in English, I am watching in English. So जब listening और watching हो रहा है directly, तो indirectly somewhere you are getting everything here. So जब time आता है तो आप समझ भी पाते हैं, बोल भी पाते हैं, right? If you think कि मैम grammar कितना important है, तो देखो grammar important है just to give you confidence कि आप जो बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए that you are speaking right. Whatever the sentences you are speaking, whatever the grammatical structure you are using, you are doing right and that will give you that confidence. But at same time, if you think कि मैम ग्रामर कर लिया स्पीकिंग आ जाएगी, नहीं, तब भी नहीं आएगी. स्पीकिंग के लिए आपको स्पीकिंग करनी पड़ती है. देयर इज़ नो अदर वे आउट, राइट? इफ़ यू थिंक कि मैम मैंने ऐसी जगह पे एडमिशन लिया है जहाँ मुझे गारंटी दी है कि 2 हफ्ते में मैं सीख जाऊँगा, आप 2 साल में भी नहीं सीख पाओगे जब तक आप स्पीकिंग करने की कोशिश नहीं करोगे. यू नीड टू स्पीक, नो मैटर राइट रॉन्ग, बट येस यू नीड टू स्पीक. कीप अ टारगेट कि 10 मिनट मुझे अपने लिए निकालना है एंड आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. 10 मिनट मुझे निकालने हैं एंड आई हैव टू राइट समथिंग इन इंग्लिश. 10 मिनट मुझे निकालने हैं वेयर आई हैव टू लिसन समथिंग इन इंग्लिश. तो जिस दिन आप दिन के आधे घंटे ये काम करने लगोगे, लिसनिंग भी कर रहे हो, राइटिंग भी कर रहे हो, आप वॉचिंग भी कर रहे हो, आई कैन गारंटी यू नोबडी कैन स्टॉप यू बिफोर बीइंग अ परफेक्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. उसके लिए आपको किसी कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट येस यू नीड टू डू दैट. वो गाइडेंस, वो पुश बहुत ज़रूरी होता है. उसके लिए ऑफ कोर्स यू नीड समवन जो आपको मोटिवेट कर सके. बट इफ़ यू थिंक दैट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डू दीज थिंग्स योर ऑन, देन देर इज़ नथिंग बेस्ट आई वुड से. सो आप ये करिए, आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जितना हो सकता है उतना करिए. मिनिमम आधा घंटा कीजिए. आई विल सी यू 15 दिन बाद एंड आई विल सी द चेंज इन योर, एंड यू आर द ओनली वन विल से कि मैम येस ये 15 दिनों में काफ़ी चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं. तो इट्स अ कंसिस्टेंसी, राइट? वो की है. इफ़ यू थिंक कि 4 दिन आप वर्क करोगे, 5वें दिन नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू डू डेली. द वे यू आर हैविंग योर फूड डेली, द सेम वे यू हैव टू प्रैक्टिस डेली. तो ये आई थिंक बेस्ट आंसर है. सो मन्नत, आई होप you have got your answer. Please let me know if you have any other query, if you have any other question. I'm here to support you. I'm here to help you. ठीक है?
तो यहाँ पर एकेडमिक कॉन्वर्सेशन, अब देखिए जो आपकी टोफल में कॉन्वर्सेशन होती है उनका क्या आंसर, आई मीन वो किस बेस्ड पे होती है, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू लिसन। मैम ने बता दिया एकेडमिक कॉन्वर्सेशन है, लेकिन कॉन्वर्सेशन किस चीज़ पे होती है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन होती है ना वो इस तरीके की होती है, जैसे टीचर है या कोई असिस्टेंट टीचर है, दे आर टॉकिंग right to each other, or maybe you are listening to a conversation between a teacher or a professor. They are talking about the class project, they are talking about the, you know, the problem that they are facing in the class, they are talking about the issues that they have, you know, related to their assignments. So all these things, जो भी conversation एक teacher और student के बीच में हो सकता है, the conversation you are going to listen, and just to make you understand कि हाँ भाई conversation चल रहा है, you will be seeing a picture. So this kind of picture will be given to you which will help you to understand कि यहाँ पर दो जने बैठे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेक्चर में तो ओनली वन प्रोफेसर विल बी स्टैंडिंग, और मे बी जो आइडिया होगा वो ऐसे होगा कि प्रोफेसर खड़े हैं एंड द स्टूडेंट आर सिटिंग एंड दे आर लिसनिंग। सो दीज काइंड ऑफ पिक्चर विल ऑलवेज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड what is the situation and what is going on. So based on this picture I can see there are two people talking to each other, so it's a conversation going on, right? So ऐसे आपको पिक्चर दिखाई देगी. So you will see a picture on your screen to understand the academic situation, and once you will listen, आप इसको listening करेंगे. Listen carefully and you must take notes. बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप नोट्स लोगे, आई कैन गारंटी यू नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट योर डिजायर्ड स्कोर फॉर श्योर। ये आप लिख के ले सकते हो बात, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेक्चर्स की। तो लेक्चर्स में क्या होता है, यू विल सी कि या तो प्रोफेसर सारे काम करता है। एक लेक्चर होता है कि भाई प्रोफेसर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और सारे बच्चे सुन रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग। एक होता है कि दैट डिस्कशन इज गोइंग ऑन, बट वो लेक्चर ही होता है कि दैट प्रोफेसर इज सिटिंग विद यू नो विद सो मेनी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर इज गिविंग लेक्चर, लेकिन प्रोफेसर बीच बीच में एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कम अप विद द क्वेश्चन, राइट। वो भी लेक्चर ही है, डिस्कशन ही है, बट वहाँ पर क्या होता है कि प्रोफेसर एंगेज करने के लिए स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। बट अगेन हियर द प्रोफेसर may engage the student by asking some question, or maybe professor is the one who is doing everything on. Now based on these, तो देखो मैंने आपको तीन चीजें बताई। एक आपका बेसिक कॉन्वर्सेशन, बेसिक, हाँ राइट, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा आपका प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग। तीसरा आपका क्या, कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। लेट मी जस्ट शो यू क्वेश्चन। जैसे जीस्ट कंटेंट है, जीस्ट पर्पस है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड फंक्शन है, क्वेश्चन रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्टिंग, मेकिंग इन्फरेंस। सो ये सारे तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर, जैसे अब मान लीजिए ये जो हमारे इनिशियली तीन क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन, ये दीज टू क्वेश्चन, ये आपके बेसिक कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये आ जाता है प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग पे, और ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन पे। सो बेस्ड ऑन दीज यू विल हैव क्वेश्चन। So there are few points that you need to keep in mind, that make sure that you take notes, right? Very important. Okay, read the question and answer choices very carefully. Okay, यहाँ पर एक replay question होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया all these audios are played once only, you have no chance that you can replay। लेकिन आपके टोफल में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पर आपको रिप्ले करने का चांस मिलता है। दीज आर कॉल्ड प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन, वेयर यू विल बी आस्क्ड टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड और द पर्पस ऑफ अ स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डिड द स्पीकर से दिस, तो वो दिस वाला डायलॉग आपको दोबारा सुनाया जाएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन। सो रिप्ले क्वेश्चन भी होता है। डोंट वरी, वी हैव अ स्पेसिफिक क्लास फॉर दैट, जहां पर मैं सिर्फ आपको रिप्ले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। सो यू डोंट वरी अबाउट इट। बी अवेयर ऑफ द क्वेश्चन टाइप। एक्टिव लिसनर, बहुत जितना ज़्यादा आप एक्टिवली सुनेंगे, समझेंगे, यू विल बी एबल टू गेट you'll be able to understand the intonation, understand how they are saying something, or of course time effectively, and do not leave any question unanswered. Why? Because कोई भी आपके पास negative marking नहीं होती है। So when there is no negative marking, so you will be advised to make an educated guess. आप educated guess कर सकते हैं, okay? So make an educated guess, but make sure that you are not leaving any answer or any question unanswered, right? Okay. Now talking about, ये तो हमारा हो गया
Okay, make sure your headphone is on. So once you are done, let's suppose you are going to the center, now you are done with your every of all the formalities and you will be asked to sit and answer the question. So what will happen here? You will be given some instructions. So वो instructions सुननी भी है, plus आपको ये भी check करना है कि आपका जो headphone है वो अच्छे से काम कर रहा है. Once everything is okay, then you click on go on and your test will start. ओके, सो हियर अब नोट्स कैसे बना सकते हैं. मैंने आपको बताया कि नोट बनाना वन ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट होता है. तो नोट्स कैसे बना सकते हैं? नोट्स हम बना सकते हैं, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. पहली बात, आपको 1-2 मिनट के अंदर ही पता चल जाएगा, ओके दिस इज द टॉपिक एंड दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट, कि आप जो सुनने वाले हैं. नाउ कॉन्वर्सेशन फॉलो द सेम स्ट्रक्चर. क्या होता है कॉन्वर्सेशन में? प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होगी, ऑफरिंग हो सकती है, डिस्कशन या कोई सोल्यूशन हो सकता है. वेयर एज लेक्चर में प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड स्टेप्स होते हैं. फोकस ऑन द मेन आइडिया, ठीक है, टोन पे कि भाई किस तरीके से बात हो रही है और उनका मूड क्या है, एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे. ओके, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन उन्हीं ऑर्डर को फॉलो करते हैं जिस ऑर्डर में आपका लेक्चर या कॉन्वर्सेशन होता है. लेकिन listening carefully, listening with focus and concentration is really really important, so make sure you do that. Okay, now while taking notes यू कैन राइट डाउन. देखो, आई डोंट थिंक सो ये मुझे किसी को बताने की जरूरत है. आजकल हम इतने टेक्स्ट प्रो हैं, वी आर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग वी प्रेफर टू टेक्स्ट. एंड जब हम टेक्स्ट करते हैं तो वी हैव सीन कितने शॉर्ट फॉर्म, कितनी एब्रीवेशन से, कितने रिडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं. सो द सेम वे यू आर सपोज टू टेक नोट्स. आपके नोट्स को कोई भी इवेलुएट नहीं करता है. यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स लेस और मे बी एक्स्ट्रा मार्क्स बेस्ड ऑन योर नोट्स कि आपने कितने अच्छे और कितने बेकार नोट्स बनाए हैं. इज समथिंग योर प्रैक्टिस. जितने क्लियर, जितने ऑर्गेनाइज नोट्स आप बनाएंगे, दैट विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन. सो नोट्स आपका चॉइस है, आपकी आपकी सेफ्टी और आपकी कनेक्शन के लिए, दैट हाउ यू कैन कनेक्ट द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव हर्ड विद द क्वेश्चन. तो नोट्स आप जितने शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वो करें आप. एंड फॉर दैट आई विल सजेस्ट यू, जैसे देखिए सिंबल्स है, प्लस का है, बेनिफिट, पॉजिटिव ऑल्सो, राइट, क्वेश्चन मार्क है व्हेन समथिंग इज नॉट श्योर या कोई क्वेश्चन है, राइजिंग है, डिक्रीजिंग है, राइट, इक्वल है. सो यूज ऑल दीज सिंबल्स दैट कैन हेल्प यू टू राइट फास्टर. ओके, आपको कोशिश करनी है कि आप जल्दी जल्दी लिखेंगे सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन. नाउ एक हम एक्सरसाइज करके देखते हैं. दो दिस इज जस्ट अ सैम्पल आई वुड से, राइट, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर. क्योंकि यहाँ पर जो मैं ऑडियो प्ले करने वाली हूँ वो 2-3 मिनट की नहीं है, वो सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड की होगी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से सुनना है. पहले सुनने के बाद आपके पास कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे आंसर करना है, राइट. सो जस्ट शो मी योर थम्स अप इफ यू ऑल आर रेडी टू लिसन टू द ऑडियो. कम ऑन, मैं एक ऑडियो चलाने वाली हूँ, आपको सुनना है. यू हैव टू लिसन केयरफुली. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लिसनिंग का, कि यू लिसन केयरफुली एंड देन यू टेक नोट्स. सो आई एम प्लेइंग एन ऑडियो, प्लीज लिसन केयरफुली एंड देन आफ्टर आई विल शो यू सम क्वेश्चन विच यू नीड टू आंसर. Directions. Now listen to a part of a talk in an anatomy class. Now, human anatomy is the scientific study of the body's structures. Some of these structures are very small and can only be observed and analyzed with the assistance of a microscope. Other larger structures can readily be seen, manipulated, measured, and weighed. The word anatomy comes from a Greek root that means to cut apart. Human anatomy was first studied by observing the exterior of the body and observing the wounds of soldiers and other injuries. But later, physicians were allowed to dissect bodies of the dead to augment their knowledge. Now, when a body is dissected, its structures are cut apart in order to observe their physical attributes and their relationships to one another. Dissection is still used in medical schools, anatomy courses, and in pathology labs. Question. Okay. 1. What is the lecture mainly about? So I hope you have heard the lecture very well. This is all about human anatomy, right? And they talk about what is human anatomy, what is the from where this word comes from, what is the meaning of anatomy, and based on that we have one or two questions.
सो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द लेक्चर मेनली अबाउट. तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके पास, दैट व्हाट इज द लेक्चर मेनली अबाउट. सो हियर दिस इज समथिंग बेसिक कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स यू विल बी आस्क्ड टू डिस्कस. सो जो लेक्चर था वो किसके बारे में था? डाइसेक्टिंग द डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन, break background information on the study of human body, what happened when the body is dissected, physician who learned about the wounds and soldiers, or this. So what do you think? Lectures किसके बारे में था? What is the lecture mainly about? Come on, answer this. What do you think? What is the lecture mainly about? Dissecting the body, dead body of humans? No, definitely not. The human anatomy is what? Physician who learned how to learn about the wounds and soldiers and the other injuries. What happened when the body is dissected? Background information of study of human bodies. Well, I think the best answer for this is they are talking about the, yes, it is B, where they are talking about the human bodies, right? That how they are dissected and what they do after dissection and how they are giving that body to the physician so that they can improve their knowledge or so. Then why does the professor mention the Greek root of the word anatomy? So Greek root kya hai? So to explain what means the study of human anatomy, to describe whether the word anatomy comes from, okay, the highlights the meaning of anatomy, or to prove that human anatomy involves dissecting humans. What do you think? Come on, answer this to me. Come on, write down in the chat box. Yes, the professor mentioned the Greek root of the word anatomy to help explain what it means to study. No, meaning to nahi hai, describe where the word anatomy comes from. No, highlighting the meaning of anatomy to prove human anatomy involves dissecting. Yes, it is D. Right, I will play one more. It is talking about internal compartments of human body. This is again the topic. Okay, now listen to this carefully. And then based on that, I will also show you some question which you need to answer. Directions. Now listen to a part of a talk in an anatomy class. A human body consists of trillions of cells organized in a way that maintains distinct internal compartments. Now, these compartments keep body cells separated from external environmental threats and keep the cells moist and nourished. They also separate internal body fluids from the countless microorganisms that grow on body surfaces, including the lining of certain tracts or passageways. Now, the intestinal tract, for example, is home to even more bacteria cells than the total of all human cells in the body. Yet these bacteria are outside the body and cannot be allowed to circulate freely inside the body. Cells, for example, have a cell membrane, also referred to as the plasma membrane, that keeps the intracellular environment, the fluids and organelles, separate from the extracellular environment. Blood vessels keep blood inside a closed circulatory system, and nerves and muscles are wrapped in connective tissue sheaths that separate them from surrounding structures. In the chest and abdomen, a variety of internal membranes keep major organs such as the lungs, heart, and kidneys separate from others. Okay. Question. Okay, so questions. What is the topic of this lecture? What is the topic of this lecture? How the human body is organized? How cell inside the body are kept separate from what outside the body? The function of cell and the human anatomy. Of course, how the body is organized. Why does the professor talk about the intestinal tract? So to prove that the body is well organized into compartments, to explain the function of body compartments, to show how particular body compartments work to keep out potential threats, or to demonstrate the importance of the intestinal tract of the organization of the body. So yes, come on, what do you think?
to prove that the body is well organized, to explain the function of the body compartments, to show the particular body compartments work, to keep out. Yes, it is C. Right? So based on that you will have questions. So देखिए, this is how you will be asked to listen. ऐसे ही आप सुनेंगे, you will be taking notes, though it is somewhere 30-40 सेकेंड का ही लेक्चर था, बट एक्चुअली जो लेक्चर और जो कॉन्वर्सेशन होते हैं दे आर मोर देन 3 minutes लॉन्ग. So you need to understand how you are supposed to answer, and accordingly will go ahead. Okay, so sare question answer. So what I'm gonna do is, let me just tell you, let me just give you 2 minute ka summary that you need to keep in mind. The very first thing here, listen carefully. Okay, second thing, must take notes while listening. Okay, third thing, use shorthand to take notes. Okay, another thing here, what's that? हो गया, लिसन करना है, नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट हैंड यूज करना है, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर options carefully. Okay, so make sure you do that. Now if I talk about in the next class, we will do the practice of conversation. So make sure you do not miss the next class, that is on Wednesday, right? So here, practice listen to podcast, listen to music, interviews, right? And the most important thing, practice taking notes. ये आपको करना ही करना है, ये बहुत important है, right? So in the next class I'm gonna see you where I will tell you that what you are supposed to do when you are listening to the conversation. कैसे आप first point में समझ जाते हैं क्या conversation है, कैसे आप notes बनाते हैं, everything, right? And based on that we will discuss further. So coming classes में हम conversation भी करेंगे, discussion भी करेंगे, replay question भी करेंगे, right? So make sure stay tuned and I'm gonna see you on Wednesday right at 3 p.m. Thank you so much for joining in. तब तक के लिए bye bye.